article the. Now this the, I am very much sure that has irritated many of us. Now here today I am going to help you out how to remove all the confusions while using this the. Now द का यूज क्या है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा आर्टिकल्स के इन ए एंड एन, तो ये ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के आगे आते हैं, लेकिन ये आर्टिकल द is used for both singular as well as plural. Yes, and so whenever I have this article the in front of me while I'm solving, reading or listening, fill in the blank specifically. So I have to get alert while I'm listening to my audio. Is the word noun? Is it plural or is it singular? Because then I have to write it, so I shouldn't make mistake there, right? Okay, so let's go a little deeper into it. First purpose of the, which everyone knows, कि किसी चीज़ को specify करने के लिए हम किसी specific noun या unique noun के लिए हम the use करते हैं, जो हम सबको पता है, right? जैसे अगर हम बोले कि the sun or the, I can say Ganga. The, can I say India? Can I? The USA. Let me take one more. Okay, the, so these are few words that I have used. Sun is noun. All the words are noun and I have written the before them. Can you guess out of all these which are wrong and which are correct? Would you like to take a chance? I'll give you again 5 seconds for this. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so for sun, Ganga and USA, I am correct. Why? Because yes, they are unique, they are one, they are natural. We haven't created them. हमने उनको create नहीं किया. Sun है, गंगा है, कोई भी नदी वो है, इंसान ने उसको create नहीं किया. And hence we write the before them. But if I say USA and it is also correct, yes, there are certain countries जिनके नाम के आगे हम द लगाते हैं और दूसरी कंट्रीज के आगे हम नहीं लगाते, उसका भी एक रीज़न है. If I say India, so India is one nation, one boundary. But when I say USA, it says United States of America. When I have UK, United Kingdoms, which means it is a union of more than one, and so we put the before them, and that is the reason this is incorrect. Now what about Sham? Again Sham is incorrect. Yes, but अगर कोई legend है, कोई super legend है, and we want to pay a respect to that person, we can put the before that name. For example, you might have heard the name of Dalai Lama. So when I want to give a respect to him, I can say the Dalai Lama. But for common people like you and I am not going to write the before our names. It is incorrect. Okay, अब ये तो हो गया एक यूज. Now यहाँ पे मेरे को आपका अटेंशन लेके जाना है राइटिंग टास्क 1 पे IELTS के.
टास्क 1 में काफ़ी बार क्वेश्चन में कंट्री के नाम आते हैं जिसके अंदर कभी यूके आता है, कभी यूएसए आता है। तब जनरली आप लोग भूल जाते हो कि आपको आगे द लगाना है। तो प्लीज़ इसका आप नोट रखें कि जब भी आप टास्क 1 की प्रैक्टिस करते हैं, पे अटेंशन टू व्हाट कंट्रीज आर गिवन एज क्वेश्चन। ओके फाइन। तो अब हम इसका दूसरा यूज देखते हैं विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जैसे कि मैंने ए और एन सिखाते टाइम आप लोग को एक हिंट दी थी कि जब मुझे कहना है वो, तो उसके लिए मैं द यूज करती हूँ। सो लेट अस सी दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। I planted a flower. Now in my second sentence, in the following sentence, want to say or want to continue talking about the noun flower. So how am I going to tell my reader that hello, I am talking about the same flower? If I write this, now what happens actually, I want to tell you that. If I say the sentence continues here, now if I say I planted a flower yesterday, and if I say a flower is very beautiful, now इसमें मैं मेरे रीडर को क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ? अब pay attention, pay close attention here. Now here I am talking about मैंने कल एक फ्लावर प्लांट किया, उगाया। अब जब मुझे उसी फ्लावर के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ ए, जो इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, और ये सेंटेंस में मैंने ए लगा के कहा अ फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स ये पूरे ही सेट में आई एम टॉकिंग अबाउट 2 different flowers, which straight away means that I have miscommunicated what I wanted to say, and इसलिए मेरे स्पीकिंग के वक्त के टीचर या मेरे रीडिंग के वक्त का मेरा रीडर will get wrong information about my thoughts. So instead of this, when I say the flower is beautiful, which means that I am telling my reader that I am, this flower is this, right? So whenever you are introducing a noun first time to your reader or to your listener, that is done with the help of a or an, and when the same noun is pointed out again in the following sentences, that is done with the help of the. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। अब ये मैंने 2 अलग सेंटेंसेस बनाए, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। नाउ दिस द कैन हेल्प यू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, आई एम वेरी मच श्योर दैट इससे पहले आप लोगों ने कभी द पे इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया होगा। I'll give you 5 seconds to try by yourself how to club these 2 sentences. Okay, would you try it by yourself once? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let me help you with this. Can I say like this? Was this the same sentence that you guys made? Well done.
Now, if you pay attention, I have written the flower. Means this is the flower that I planted yesterday. Is very beautiful. So I can directly start to point out my noun about which I am further explaining about it in my sentence. So here I have started my sentence with the, right, where I have straight away pointed out my noun. I have said the flower that I planted yesterday is very beautiful. Did you get it? Can you write like this? क्या आप ऐसा लिख सकते हो? Easy, very much. Now I would like you guys to try more of such kind. I'll give one more example to you to have a strong idea about it, and that can make you independent while you're using it. Now here again there are two sentences. This is the first sentence and this is the second. Easy? Okay, so what have I written? I gave an idea. Here I have introduced the noun idea, and because we have idea when we pronounce a, we have an. So we have here I gave an idea to my father yesterday. ये एक sentence है. दूसरा he is who? My father. He liked the idea. So here मैंने मेरे रीडर को पता है कि मैं उसी आइडिया के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने कल मेरे फादर को दी, और इसलिए मैंने यहाँ पे द लिखा. इजी टू अंडरस्टैंड ये. तो चलो अब हम ये दो सेंटेंसेस को क्लब करने का ट्राई करते हैं. आपको मजा आ रहा है? आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना चाहोगे? फाइन, मैं आपको 5 seconds देती हूँ. यू कैन जस्ट हैव अ रफ आइडिया ऑफ इट. रेडी? 1 2 3 4 5. Let's check. I gave an idea to my father yesterday. He liked the idea. So, how can we club them? So, the idea जो मैंने कल मेरे पापा को दी थी वो उनको पसंद आई. ऐसा हम कहते हैं काफ़ी बार हिंदी में. The same thing happens here. Yes, very simple. Simple. The idea which I gave to my father yesterday was liked by him. Fine. So, देखो, जब आप द के साथ में वर्क करते हो तो आप सेंटेंस को एक नया स्टार्ट दे सकते हो. जो आप कॉमन स्टार्ट देते हो उससे आपका ये वाला स्टार्ट थोड़ा बेटर हो जाता है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जिसके वजह से स्ट्रेट आपके सेंटेंस की क्वालिटी बढ़ जाती है, विच बेनिफिट्स यू अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रामर. यस. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका सपोज राइटिंग टास्क 1 हो गया या आप ऐसे लिख रहे हो और आप ऐसे सेंटेंसेस को रीड करते हो जो आपने लिखे हैं, जो इस तरीके से आपने लिखे हैं, आप उनको रीराइट कर सकते हो इस तरह से, जो आपकी सेंटेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको आर्टिकल्स का यूसेज, उसका इम्पोर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसकी वजह से when you'll actually apply, you'll apply it correctly.